बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम जॉब रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बांग्लादेश से एक स्टूडेंट ने भेजा है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ द डायोड सर्किट शोन इन फिगर। तो ये जो फिगर है इसमें डायोड सर्किट बताना है और स्केच V0 फॉर द नेटवर्क। तो आउटपुट वोल्टेज V0 जो है उसको स्केच करना और इसमें ये डायोड्स के कंडीशन बता रहा जो कि मैंने स्नीड डायग्राम में शो कर लिया, इसी को रीड्रॉ किया। डायोड बता रहा है कि D1 और D3 जो है इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज 0.6 है, ये और ये, यानी जो ही यहाँ पे 0.6 वोल्ट आ जाएगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और इसी तरह ये दोनों जो है इनके लिए फॉरवर्ड बायस है 0.75। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो हम पॉजिटिव हाफ ले लेते हैं। पॉजिटिव हाफ में ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव। अब ये देखें, इसके पॉजिटिव डायोड्स के नेगेटिव के साथ टच कर रहा है तो ये डायोड्स रिवर्स बायस हो जाएंगे। इसी तरह नेगेटिव जो है ये इसके पॉजिटिव के साथ टच कर रहा है तो ये दोनों भी रिवर्स बायस हो जाएंगे। तो ये चारों डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस हो जाएंगे। तो रिवर्स बायस का मतलब हम इसको ओपन सर्किट कर देंगे और इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है इसके अंदर, देयरफॉर वोल्टेज ड्रॉप भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से में। जब नेगेटिव हाफ आ जाए तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो अब नेगेटिव यहाँ टच करे और यहाँ पे टच करे दोनों जगह पे, तो इसका मतलब है ये डायोड फॉरवर्ड बायस है। पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ टच कर रहा है यहाँ पे भी, तो ये भी फॉरवर्ड बायस होने। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा और वो ये है कि जब यहाँ पे 0.6 वोल्ट जब इनपुट पे आ जाए 0.6 तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और इसी तरह ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो जब ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे तो करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देगी और रास्ता मुकम्मल, तो इसको इस रास्ते से करंट फ्लो ना होने के बराबर होगी। ऑल्दो हम कह रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस है, लेकिन मेरे ख्याल में 7.75 ये अचीव नहीं होगा, और अगर हो भी तो बहुत माइनर करंट इसमें से फ्लो करेगी जो कि हम आगे देखेंगे सिमुलेशन में। फिलहाल हम ये कहते हैं कि ये रास्ता हमारे पास है करंट फ्लो। तो अब यहाँ से जब करंट फ्लो कर रही है इसमें, तो एक चीज देखना है कि यहाँ एक तो मैंने वो कैपेसिटर को फिलहाल हटा दिया, अब ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। तो रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज जो है उनको सेम फेज होते हैं, सेम उनके शेप इसमें होगा यहाँ पे। तो अगर ये नीचे की तरफ नेगेटिव है या ट्रायंगुलर शेप है तो करंट की भी वही शेप होनी चाहिए, और वो करंट जब इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगी तो इस पे भी जो वोल्टेज ड्रॉप है इसकी भी वही शेप होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ पे एक चीज फर्क ये होगा कि अब हम वोल्ट मीटर यहाँ पे हम लगा रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव, तो ये जो जो प्लॉट होगा ये इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी पॉजिटिव साइड पे ये वोल्टेज। तो वो कुछ इस तरह से होगा कि आप ये देखिए, ये हमारा इनपुट सिग्नल है और ये नेगेटिव हाफ की हम बात करें, जीरो लाइन है हमारे। नेगेटिव हाफ की हम बात करें तो जब नेगेटिव अप्लाई है तो यहाँ पे जो वोल्टेज है इसको हम V0 कह रहे हैं, उसके शेप कुछ इस तरह से बन जाए। और ये देखिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब ये तकरीबन 0.6 है तब ये करंट फ्लो होना शुरू हो रही है और उसकी वजह से ये वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है। उसके बाद जो ही ये 6.6 से कम हो तो ये फिर करंट फ्लो रुक जाएगी और इसकी जो जो वेव शेप यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया विदाउट कैपेसिटर। अब कैपेसिटर जो लगा देंगे तो इसका क्या असर होगा। अभी फिलहाल आप ये स्केल वगैरह पे ना जाएं, क्योंकि ये मैंने स्केल इस डायग्राम में ये तो ये 3 वोल्ट मैक्सिमम है, लेकिन इसको दिखाने के लिए इसके स्केल को 100 वोल्ट पर डिवीजन कर लिया है। तो ये आप इसको 1.5 वोल्ट ना कहें बल्कि ये 150 मिली वोल्ट के करीब यहाँ पे है फॉर दिस सर्किट। अच्छा, अब जो मैं बता रहा था कि जब हम कैपेसिटर लगा देंगे तो क्या होगा, तो हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया। तो जैसे हमने ब्रिज सर्किट
में पढ़ा हुआ कि फिल्टर करने के लिए हम एक फिल्टर कैपेसिटर लगा देते हैं आउटपुट पे, और उसका असर क्या होता है कि ये देखिए, ये फुल वेव होना चाहिए इस तरह से ये, लेकिन जब हमने ये फिल्टर कैपेसिटर लगा दिया तो ये इसको स्मूथ कर देता है, यहाँ तक नीचे नहीं जाने देता बल्कि ऊपर तक ये इसको लेके जाता है, आगे तक स्मूथ करता है। तो एग्जैक्टली वही असर यहाँ पे भी होगा हमारे सर्किट में, और जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये देखिए, ये विदाउट कैपेसिटर था, ये विद कैपेसिटर की शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी कि यहाँ से और ये एक्सटेंड होता जा रहा है आगे। तो बेहतर समझने के लिए हम दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक हमारा स्टार्टिंग लाइन हो गया, और ये समझें यहाँ पे जहाँ पे ये स्टार्ट है और ये इसका एंड है, उसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो एक तो वोल्टेज जो है वो, इसमें वोल्टेज बिल्डअप थोड़ी देर बाद हो रहा है, इतना सा गैप इसमें है, यहाँ पे यहीं से शुरू हो रहा था, यहाँ पे थोड़े से गैप्स है, और ये शायद कैपेसिटर चार्जिंग की वजह से इसमें ये हो रहा है। लेकिन जब कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है तो अब ये देखिए, ये यहाँ से डिस्चार्जिंग शुरू है कैपेसिटर, तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया था, लेकिन इसकी डिस्चार्जिंग यहाँ तक आ रही है। तो ये चीज़ कैपेसिटर लगाने से हुआ कि इसको स्मूथ करने के लिए ये आगे तक लेके गए। तो यही चीज़ हमने ध्यान में रखना है जब हम इसको फाइनल प्लॉट करेंगे। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड के लिए एक तो ये रास्ता था कि हम यहाँ से ये केवीएल इक्वेशन लिख लें, लेकिन चूंकि हमें आरसी की वैल्यू नहीं पता तो हम करंट नहीं निकाल सकते, और करंट नहीं निकाल सकते तो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड इसका हम नहीं मालूम कर सकते यहाँ से, लेकिन हम इस लूप के थ्रू मालूम कर सकते हैं। इस लूप पे अगर हम चलें तो यहाँ देखिए, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप जो हो सकता है वो 0.75 है। तो हम इसको लूप को अगर लेके चलें तो केवीएल लिखेंगे, हम यहाँ से चल रहे हैं माइनस प्लस 0.6, फिर ये भी प्लस हो जाएगा, ये इसको V0 प्लस, और उसके बाद ये माइनस 0.75, तो यहाँ से V0 आ गया 0.15, यानी जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये जो हमारा वेव शेप है, ये जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो 0.1 वोल्ट होना चाहिए। तो इस तरह से वन कंप्लीट साइकिल के लिए आप इसको प्लॉट कर सकते हैं कि जब ये वोल्टेज पॉजिटिव है तो आउटपुट 0 है, और जब ये वोल्टेज नेगेटिव है तो इसकी ये शेप है और इसके मैग्नीट्यूड जो है वो 0.15 है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे, ऑल्दो ये बहुत से लोग इसमें इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन, इसमें थोड़े से सोचने का है, कोई तरीका है, और मेरे पास भी डायरेक्ट आंसर नहीं था तो मैंने सिमुलेशन के हेल्प से इसको समझने की कोशिश की, और आपके लिए भी मैं इस वीडियो के एंड पे सिमुलेशन अटैच कर देता हूं, तो जो इंटरेस्टेड हैं वो सिमुलेशन को भी देख लें। शुक्रिया। Trying to simulate the circuit, and if you look carefully, the only thing different is that I have added diode here, single diode, but here I have used two diodes. Now I could not find, the question says that this has a forward bias drop of 0.6 volt, and this will have 0.75 volts. I could not find a diode. So just for the purpose of simulation, I'm adding these two diodes. That means if this is 0.7, then this will be 1.4 volt. So the same here. So what will happen technically is that only this diode and this path will conduct, because in the forward bias case, this will quickly turn on at 0.65, and similarly this at 0.6, and this at 0.6. So they will conduct, and the current flow path will be like this, from here, this, and to the source. I'm also added two current meters, ammeters, just to show which path is conducting, and you can see in the diagram. Another thing which was bothering me is the
presence of a capacitor. What is the effect of this capacitor? That we'll also see. Our aim is actually to plot this voltage here. So I have used both. This is the input in the scope and also the output in the scope. So let's see. So now since it is the positive peak, this is top positive and bottom negative, none of the diodes are conducting. They're all in a reverse bias case. Now we're going down, and the moment this crosses 0, you can see there will be some flow of current. Now let me just slow it down a little bit. You can see this current is now started flowing, and this is the path. And you can see this current is increasing gradually, 0.3135. This is minimal, where a leakage current we can say is 0.003 milliampere. So we can safely say that these and this not conducting, only this path is conducting. Now, what about the shape of the voltage curve? Since it is going through the resistor, it will just follow the shape of the input. So let me just enhance it speed. And you can see that this is now reaching the maximum 0.3, almost minus 3 volt, and now it is going up. So the current should now be reducing gradually. You can see this is still minimal current. Now look at the shape of the voltage here. That is the question. What will be the shape of the voltage? Now it is following exactly the shape of the input signal. Same shape. The moment, although the direction is reversed because we are looking from here, this side is positive. Okay, so we stop here and we will now see the effect of the capacitor. Now this is not conducting anymore. Let me just stop it and connect this. So, and wire. Okay, so this capacitor is now connected, and we'll see what is the effect of this capacitor. We run again. Positive half, no conduction. The little bit current flow that you saw here was because of the capacitor was charged. Now let's see, it's all stopped, and now we are going towards the negative direction. The current is flowing. Now look, this current is now going through two paths, and it is going faster through the capacitor. So it is now charging the capacitor as well. And if we stop here, there is slight difference between from this point to this, and this took little more time to rise because of the capacitor charging. Capacitor is taking time to charge. Run again. Okay, now it has reached full negative, and now see the capacitor is reverse charging. Now the capacitor has fully charged, and it is now again adding into the current, and so the shape is now, this is flattened slightly than this. This was going or following exactly same shape, but this is slightly flattened than this one. As you know from the full wave rectifier, when we add a capacitor, we call it filtering. It tries to smooth the output. So that effect is happening here.
And also it took slightly more time. Now look here, this finished here at this point, but this one is finishing almost at the end. So it took slightly more time to discharge. It started late and discharging late because of this current or the discharging of the capacitor. So speeding up just to give you one more thing. The scale for this one is different, 100 millivolt per division, and the red one is 1 volt per division. This was just to show you clearly how is the output looking. So it's about what 5.15 or 1500 millivolt here in this case. Okay, so I hope you have got the concept of the adding of the capacitor in this circuit.